Very good morning, students. I hope you all are fine. Today we are going to start Sums of Chapter 1. In today's video, 3 points will be covered: interest on capital, interest on drawings, and distribution of profit or loss among partners. Now here is illustration 1. Some details are given. There are two partners, partner A and partner B. Their capital balance as on 1/4/2016, 4 lakh and 2 lakh respectively. Then their drawings as on 1/4/2016, 1000 and 2000 respectively. Then net profit is given, which is as on 31st March 2017, 1,99,850. Now there are some provisions in partnership deed. First, interest on capital will be paid at 10% per annum. Then interest on drawings will be charged at 5% per annum. From all these information you have to prepare P&L appropriation account and partners capital account. Here I have prepared the format of P&L appropriation account and partners capital account. In profit and loss appropriation account, on debit side 2 columns, particulars and amount, and same on credit side, particulars and amount. Then partners capital account, first column for date, then particulars, then amount column separately for each partner, partner A and partner B. Then same on credit side, date, particulars, amount column for partner A, amount column for partner B. Now first we will start with opening balances. Here capital, drawing and net profit is given. So first we will write in these two accounts. Now see, capital balance is given 4 lakh and 2 lakh respectively, and we are maintaining capital account. It has credit balance. Capital का जो balance होता है वो credit होता है. So we will write in partners capital credit side. Yes. So here we will write the date 1/4/2016, which is opening balance. So we will write by balance brought down. For partner A, amount is 4 lakhs, and for partner B 2 lakhs. Then drawings, we are not maintaining drawings account, so here drawings account will be closed with capital account. So here drawings balance we will write in capital account. हम ड्राइंग्स अकाउंट नहीं बनाते हैं, उसका बैलेंस हम कैपिटल अकाउंट में ही लिखेंगे. सो ऑन डेबिट साइड इन द कॉलम ऑफ डेट 1/4/2016, देन हियर 2 ड्राइंग्स अकाउंट फॉर पार्टनर A is 1000 and partner B 2000. Now the next is net profit as on 31st March 2017. When we will prepare final accounts from trading to balance sheet, the entire final accounts, we will get net profit from profit and loss account. But here it is given directly, so we will write in P&L appropriation account. Now see, here date is 31st March 2017. As our year is starting on 1/4/16, so it will be ended on 31st March 2017. So on this date we are preparing final account, and on this date we will get net profit, which we are transferring to P&L appropriation account. ये जो net profit है, अगर पूरा final account हम बनाएंगे तो ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलेगा.
बट यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है, सो हम उसको डायरेक्टली पीएनएल एप्रो में ट्रांसफर करेंगे। नाउ ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। सो हम पीएनएल एप्रो में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट एंड अमाउंट इज 1,99,850. Now see, first provision is interest on capital will be paid at 10% per annum. So first we will make some calculations and then we will give effect in these two accounts. So here we are calculating interest on capital and rate of interest is 10%. Here we are calculating interest on capital. So that capital balance will be considered. First we are finding for partner A. So what is capital balance of partner A? 4 lakh. So here 4 lakh multiply 10%. So you will get 40,000, that is interest on capital. This is for partner A. Now we will calculate for partner B. So B's capital will be considered. Capital is 2 lakh. So 2 lakhs multiply 10%. So we will get 20,000, that is interest on capital for partner B. Now we have to give effect in these two accounts. First of all, this interest on capital is paid by firm to partner. Yes, firm is paying to partner. So it is expense of firm and this expense is related to partners. Yes, as firm is paying to partners. So we will record in P&L appropriation account. As this is an expense, so expenses will be debited. So on debit side we will record to interest on capital. Now in inside column we will write separately and then total in the column of amount. So for partner A is 40,000 and for partner B is 20,000 and total is 60,000. Now the second effect of interest on capital. Interest on capital is paid to partners. So here firm will give to partner, but as we are maintaining capital account, so we are not paying in cash, we will give effect in partners capital. So by giving interest, partners capital will increase. So we have to record on credit side. Or simply you can just understand in this way, cross effect, P&L appro debit, partners capital credit. अगर सिंपल वे में आपको लर्न करना है, समझना है, तो आप इस तरह से समझ सकते हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक्सपेंस है, फर्म का एक्सपेंस है, सो डेबिट साइड P&L एप्रो में आएगा और उसकी क्रॉस इफेक्ट होगी पार्टनर्स कैपिटल में। क्रॉस इफेक्ट इट मीन्स यहाँ पे डेबिट है तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या होगा? क्रेडिट। सो ऑन क्रेडिट साइड वी विल राइट डेट 31st March 2017 as on this date we are preparing final accounts. So we will calculate interest on this date by interest on capital. Partner A's interest is 40,000 and partner B 20,000. So this way we have to give effect of interest on capital. Now the second provision is interest on drawing will be charged at 5% per annum.
Now first we have to calculate interest on drawing and then we will give effect in these two accounts. So here I am calculating interest on drawings and rate of interest is 5%. अब यहाँ पे हम ड्राइंग्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं. सो हम ड्राइंग्स का बैलेंस जो पार्टनर का ड्राइंग है वो अमाउंट कंसिडर करेंगे. जब हमने इंटरेस्ट कैपिटल का ढूंढा था तो हमने कैपिटल की अमाउंट कंसिडर की थी. नाउ वी हैव टू कंसिडर द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स. फर्स्ट वी विल फाइंड फॉर पार्टनर ए. पार्टनर ए's drawing is 1000. So 1000 multiply 5%. We will get 50 rupees. And same way we will find for partner B. Partner B's drawing is 2000. So 2000 multiply 5%. You will get rupees 100. Now we have to give effect of interest on drawings. अब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो पार्टनर पे चार्ज किया जाता है. यस, फर्म इज चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑन पार्टनर्स. यस, सो यहाँ पे पार्टनर्स इंटरेस्ट पे करेंगे. पार्टनर्स विल पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू फर्म. सो फर्म इज गेटिंग इंटरेस्ट. यस, सो इट इज इनकम ऑफ फर्म and it is related to partner. So we have to record in P&L appro credit side. It is income, so we will record on credit side. So हम credit side हमारी income record करेंगे by interest on drawings. In inside column we will write separately for partner A and B. A's interest on drawing is rupees 50 and for B 100, and total we have to write in the column of amount. So 150 in the column of amount. Now the second effect. As we are charging interest on drawings on partner, so partner is paying. Here partner is not paying in cash. We are maintaining partner's capital account. So directly we will deduct from partner's capital. So here partner's capital will decrease. So we have to record on debit side. Capital का balance होता है credit. अगर मुझे और capital increase करनी है, so again and again I have to credit. Yes. और अगर मुझे कैपिटल का बैलेंस कम करना है तो रिवर्स करना पड़ेगा. इट मीन्स मुझे डेबिट साइड रिकॉर्ड करना पड़ेगा. यस, सो दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, और इन सिंपल वे you can understand with cross effect. If we are recording in P&L appro credit side, so cross effect will be given in partners capital debit side. Yes. So यहाँ पे credit किया है, partners capital में हो जाएगा debit. So here we will record date 31st March 2017 to interest on drawings. पार्टनर ए का इंटरेस्ट क्या है 50 एंड पार्टनर बी का 100. So this way we have to give effect of interest on capital and interest on drawings. Now no point is left, so we will close P&L appropriation account and partners capital account. First we will close profit and loss appropriation account and then partners capital account. All accounts will be prepared in sequence and we will close in sequence. So here with figures it is clear that total of credit side is more. So we will close with this amount. Total is 2 lakhs. So the same amount we will write here. Now see, by deducting 60,000 you will get difference amount 1
40,000। जब आप अकाउंट क्लोज करोगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा यहाँ पे 1,40,000। ये जो डिफरेंस है इक्वल करने के लिए हमने भले डेबिट साइड लिखा है, बट ये ऑपोजिट है, क्रेडिट बैलेंस है, ये प्रॉफिट है। दिस इज डिविजिबल प्रॉफिट। जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस में मिला था वो नेट प्रॉफिट था। ये कौन सा प्रॉफिट है? डिविजिबल प्रॉफिट। ये हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो हियर वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 1,40,000 between two partners. So here I am calculating what profit they are getting. So partner A and partner B, what is their profit loss sharing ratio? Now see, in question there is no detail about profit or loss sharing ratio. So if there is no instruction, we will follow provisions of Indian Partnership Act 1932. So according to Act वी विल डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। यहाँ पे अगर रेशियो नहीं दिया हुआ है तो हम पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इक्वली मीन्स 1:1। yes, we can say that their ratio is 1:1 and the total of their ratio is 2। अब इसका मतलब क्या है कि अगर प्रॉफिट टोटल 2 है तो उसमें से A को कितना मिलेगा? 1 and B को remaining 1. Yes? So this way we have to write. Now we will distribute divisible profit 1,40,000 between two partners. Here ratio is 1:1, so directly you can make two parts of 1,40,000, 70,000, 70,000 to each partner. But in case if ratio is not equal, any other ratio is given in partnership deed. So how you have to calculate? So here I am explaining. First we will find for partner A, total divisible profit is 1,40,000. From 1,40,000, what is share of A? A का कितना शेयर है? 1. So multiply 1 और total क्या है? 2. So by this you will get 70,000 and same हम पार्टनर बी का भी फाइंड करेंगे। अगेन टोटल प्रॉफिट क्या है? 1,40,000 और बी का शेयर कितना है? 1 आउट ऑफ टोटल इज 2। इस तरह से हम पार्टनर के बीच में डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। Here it was very simple as ratio was equal 1:1, so directly you can get 70,000 to each partner. But in case if ratio is different, then by this way you can find profit share of each partner. Now here we will write an inside column separately for each partner. This profit we are not giving in cash to partners, we are directly transferring to partners capital. So partners capital will increase. So here the effect will be given from P&L appro to partners capital. So यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? To partners capital account. For partner A and B, their share is 70,000 and 70,000. When you are distributing divisible profit between partners, you can just make the total of their share. You will get the amount which is written as difference in the column of amount. So you can tally. इस तरह से आप टैली कर सकते हो कि जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो सही किया है कि नहीं। नाउ दिस प्रॉफिट वी आर गिविंग टू पार्टनर्स। सो द सेकेंड इफेक्ट अगेन क्रॉस इफेक्ट, यहाँ पे डेबिट है तो कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। सो पार्टनर्स कैपिटल ऑन क्रेडिट साइड डेट 31st March 2017, from which account we are getting this? P&L appropriation account. So here we will write by P&L appropriation account, and this is divisible profit.
So we will write divisible profit in bracket. Now what share A is getting? 70,000, and same partner B is getting, so 70,000 in column of B. Now we have to close partner's capital account. So here total of credit side is more, so we will write total. Here total is 5,10,000, and for partner B 2,90,000. Now with same amount we are closing, so we will write on debit side 5,10,000 and 2,90,000. जब हम अकाउंट क्लोज करेंगे, यहाँ पे तो फिगर से क्लियर है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, सो हम क्रेडिट साइड की ज्यादा वाली अमाउंट से अकाउंट क्लोज करेंगे. अब ये जो टोटल है इसमें से ये फिगर्स माइनस करोगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस. अब पार्टनर ए का डिफरेंस क्या आया? 5,08,950 और पार्टनर बी का डिफरेंस आएगा 2,87,900. दिस डिफरेंस इज closing balance of capital. So here we will write 31st March 2017 to balance carried down. When we will prepare entire final account, the closing balance of capital will be written on capital liability side in balance sheet. But as here we are just preparing P&L, APRO and partners capital, so you have to solve sum up to this only. इस illustration में जो भी topics cover किए थे, interest on capital, interest on drawing and distribution of profit, वो सब simple points थे. इसमें typical भी आ सकते हैं जिसमें drawings की date change होगी, उनका ratio कुछ different होगा. Yes, so some typical points will be covered in same topics, which I'll explain you in next illustration. Now second illustration, there are two partners, partner A and partner B. Here profit or loss sharing ratio is given 4:1. Then capital as on 1/4/17, 70,000 and 80,000 respectively. Drawings. Now see here, date of drawing is different. Partner A withdraw rupees 2,000 as on 1/4/17. So drawings date for partner A is 1/4/2017, and for partner B amount is 4,000 and date is 1/10/2017. So this point is different, which was not in illustration 1. Then net profit is given 1,48,420. Then provisions, interest on capital will be paid 5% per annum. Interest on drawings will be charged at 2% per annum. By this information, you have to make necessary calculations and you have to prepare profit and loss appropriation and partners capital account. In this illustration, I am not preparing P&L, APRO and partners capital. That is your homework, you have to prepare. But all necessary calculations I will explain you. Now see, capital balance will be written on partners capital credit side. Drawings will be written in partners capital debit side. Net profit we will write in P&L appropriation credit side, as this is profit. Yes. Then we have to calculate interest on capital and interest on drawings. Here interest on capital is 5% and interest on drawing 2%. So here I am explaining the calculation of interest on capital and interest on drawing. First, interest on capital.
and rate of interest is 5%. First we will find for partner A. So A's capital will be considered. Yes, हम A की कैपिटल का इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं. So A की कैपिटल कंसिडर करेंगे, that is 70,000. So 70,000 multiply rate of interest is 5%. So you will get 3,500. Same way we will find for partner B. पार्टनर बी की कैपिटल क्या है? 80,000. सो हम ये कंसिडर करेंगे. 80,000 मल्टीप्लाई 5%. सो यू विल गेट 4,000. दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन सिंपल ही थी जो मैंने इलस्ट्रेशन 1 में कराई. बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर बी के लिए थोड़ा डिफरेंट है. सो नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू how to calculate interest on partners drawings, and the rate of interest on drawing is 2%. फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे पार्टनर ए के लिए. सो ए का ड्राइंग हम कंसिडर करेंगे. 2,000 मल्टीप्लाई 2%. अब यहाँ पे डेट देखो 1/4/2017 है. हमारा फाइनेंशियल ईयर भी इसी दिन स्टार्ट हुआ है. सी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है. सो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? 1/4/17 से लेकर ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च 2018. ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है. अब जो पार्टनर ए ने ड्राइंग्स किया है वो कौन सी डेट को है? ओपनिंग स्टार्टिंग डेट पे ही है. तो इस पे इंटरेस्ट तो पूरे साल का लगेगा. यस, सो पूरे साल का लगेगा. सो हम सिंपली जैसे इलस्ट्रेशन 1 में कैलकुलेट कर रहे थे वैसे ही कैलकुलेट होगा. 2,000 पे 2%. सो यू विल गेट 40 रुपीज. नाउ फॉर पार्टनर बी, व्हाट इज ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर बी? 4,000. सो हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे? 4,000. इंटरेस्ट रेट सेम ही है 2%. सो हियर यू विल गेट 80 रुपीज. अब ये 80 रुपीज तो पूरे साल का आया. यस, इट इज पर एनम, पूरे साल का आया है. बट पार्टनर ए ने ड्राइंग्स कब किया है? 1/10/2017 पे. तो अप टू 9th मंथ हम इंटरेस्ट ले नहीं सकते हैं क्योंकि उसने ड्राइंग ही इस डेट को किया है. तो इधर इंटरेस्ट इस डेट के बाद का आएगा. सो हाउ मेनी मंथ्स आर देयर? सी 10, 11, 12, 1, 2 and 3. On this date our financial year is over. So 6 month, 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा. सो ये तो पूरे साल का है, हमें 6 महीने का चाहिए. सो मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12. सो यू विल गेट 40 रुपीज. यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो. 4,000 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12 एंड परसेंटेज है इसलिए 100. इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो. सेम ही आएगा 40 रुपीज. 100 इज फॉर परसेंटेज साइन. व्हेन वी आर रिमूविंग परसेंटेज साइन वी हैव टू राइट 100 इन डिनोमिनेटर. अगर यहाँ पे भी आपको इस तरह से करना है तो आप इस तरह से कर पाओगे. 2,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 100. आपका आंसर सेम ही आएगा 40. बट अगर आप कैलसी में डायरेक्ट कर रहे हो तो 2,000 देन मल्टीप्लाई देन 2 देन परसेंटेज साइन, you will get 40. Yes, so whichever you find easy you can solve in that way. Now here I have explained both points, interest on capital, interest on drawing. एक और चीज, जब आप P&L अप्रो क्लोज करोगे तो आपको कुछ डिविजिबल प्रॉफिट आएगा. वो प्रॉफिट आपको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 4:1. यस, सो यहाँ पे ध्यान रखना कि किस तरह से करना है. मैंने आपको इलस्ट्रेशन 1 में एक्सप्लेन किया था. यू हैव टू राइट द रेशियो 4:1. देन टोटल, व्हाट इज टोटल? 5. सो जब आप डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ए को कितना मिलेगा? 4 आउट ऑफ 5 एंड बी को कितना मिलेगा? 1 आउट ऑफ 5. So
calculation of divisible profit, as well as preparing P&L, APRO and Partners Capital is your homework. आपको ये पूरा सम विथ कैलकुलेशन करके व्हाट्सएप पे फोटोज भेजनी है. एंड इफ यू हैव एनी डाउट, कोई भी डाउट है कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी.